Hey guys, hope you all are doing well. So today we'll start with our topic, the anterior as well as the posterior triangle of the neck. So talking about the anterior and posterior of triangles of the neck, it is important to know that this question comes as a 15 or a 5 marker question in your anatomy exams. Anterior triangle is the most important triangle which comes as a 15 marker question also. So let's get started with the anterior and the posterior triangle of neck. In this video, we learn something in very much short about the both these triangles and their boundaries and the smaller triangles which are present in these anterior and posterior triangles. Later on in the second part of the video, we'll be discussing about all the smaller triangles which are present inside them. So starting off, there are two triangles of the neck, and this is basically the lateral side of our neck, which is shown in the diagram. Fine. So now it is important to know that there is an important muscle which is called the sternocleidomastoid muscle, which divides the triangles into two halves. Upper half, which you can see towards the midline of the neck, is the anterior triangle, and towards the posterior side, there is the posterior triangle. Fine. So as you can all see, towards the midline, anterior to the sternocleidomastoid, there is anterior triangle. So anterior triangle of the neck is basically that triangle which lies between the midline. This is basically the midline of the neck and the sternocleidomastoid. So sternocleidomastoid और anterior part of the neck के बीच में ये जो triangle आपको दिख रहा है, that is the anterior triangle. So basically this is the definition of the anterior triangle. Now knowing about the boundaries, हमें पता होना चाहिए कि anterior triangle की आसपास क्या क्या बाउंड्रीज हैं. तो ऑब्वियस ही बात है, हमारे तीन पार्ट्स एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं. ठीक है, थ्री साइड्स मेक अ ट्राइंगल. फाइन. तो लेटरली एंटीरियर ट्राइंगल का जो है दैट इज द स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड. ठीक है, लेटरल बाउंड्री इज द स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड. फाइन. जो हमारी मीडियल बाउंड्री आपको दिख रही है, दिस इज द मीडियल बाउंड्री, दैट इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ योर नेक. The also you can say the median plane of the neck. ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है, this base of the mandible. ठीक है, the base of the mandible as well as this angle of the mandible, this forms the superior part of the anterior triangle. So sternocleidomastoid muscle laterally, medially your median plane of the neck. ठीक है, anteriorly कह सकते हो, and superiorly is your the base of the mandible as well as the angle of the mandible. So this is basically the boundaries of your anterior triangle. Moving on to your posterior triangle. So the triangle which is located posterior to the sternocleidomastoid के posterior जो triangle present होता है, that is basically the posterior triangle of the neck. So it is basically a space which is present on the side of the neck which is situated behind the sternocleidomastoid muscle. Fine. अब obviously बात है, anterior triangle की भी कुछ boundaries थी, तो we have the boundaries of posterior triangle also. So what are the boundaries? Obviously बात है, तीन boundaries तो होंगी. एक हमारा base होएगा triangle का, एक हमारा apex, fine, and एक हमारा lateral boundaries as you can see. So base of the triangle is formed by the clavicle as you can see. Apex, this is the apex. So apex is formed by the this sternocleidomastoid, and ये जो मसल आपको पीछे दिख रहा है, trapezius muscle. तो जो हमारा ये जो मसल है trapezius और जो sternocleidomastoid है, जहां पर मीट करते हैं आपस में, that is the apex of the triangle. Fine. Anterior boundary is by the sternocleidomastoid and posteriorly हमारा ये जो मसल है, that is the trapezius muscle. Fine. So these were the boundaries. So let's now talk about the contents of these triangles, the smaller triangles which are present inside the anterior and the posterior triangles. Before starting that, this is a diagram that you should draw in your exams which shows the mandible. This is basically the anterior view. The anterior view, ठीक है, जो हमारा mandible का है और जो हमारा neck का है. This is basically the mandible. और साइड्स पे ये जो आपको दिख रहा है मैंडिबल की साइड्स पे,
This is the mastoid process. So why the reason behind that why I have drawn this mastoid process is क्योंकि हमारा जो मेन मसल है जो हमारे एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रायंगल में डिस्टिंग्विश कराता है दैट इज द स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड. सो एज द नेम सजेस्ट स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड आकर मेस्टॉइड प्रोसेस को भी टच करेगा, ठीक है, या उससे ज्वाइन होगा. सो रीजन बिहाइंड दिस इज दिस. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट कि हमारा मीडियन प्लेन है, एक मीडियन प्लेन में सबसे utmost जो सुपीरियरली है दैट इज योर पार्ट ऑफ द मैंडिबल. ठीक है, मैंडिबल एंड एज यू कैन सी द बेस वाला पार्ट हमारा जो हो जाएगा दैट इज द चिन एरिया. ठीक है, द बेस ऑफ द मैंडिबल एंड दीज आर द दिस इज योर एंगल ऑफ द मैंडिबल. फाइन. देन अगर हम मीडियन प्लेन की बात करते हैं देयर इज अ हॉर्सशू sorry U-shaped bone, not horseshoe, that is there is a hyoid bone, U-shaped bone which is present, ठीक है, below the chin, ठीक है, in the median plane, and below your hyoid bone in the median plane there is sternum. To the sternum the clavicle is attached. Fine. Now let's talk about certain muscles. सबसे पहले तो आपका मेन मसल विच इज द स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड. तो स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड एज द नेम सजेस्ट स्टर्नम से अटैच्ड होगा. ठीक है, हमारा क्लीडो मीन्स क्लैविकल से अटैच्ड होगा एंड मेस्टॉइड का मतलब है मेस्टॉइड प्रोसेस से अटैच्ड होगा. तो दैट मीन्स टू से स्टर्नो स्टर्नम से अटैच्ड, क्लीडो क्लैविकल से अटैच्ड है एंड superiorly it is attached to the mastoid process. Therefore this pink वाला जो मसल है this is called the sternocleidomastoid muscle. सेकेंड ऑफ ऑल डायगैस्ट्रिक मसल. सो ये जो आपको दो ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो मीडियन प्लेन से सेपरेटेड हैं, दीज टू ट्राइंगल्स आर बेसिकली द डायगैस्ट्रिक मसल्स. सो डायगैस्ट्रिक मसल has two further subdivisions. One is the anterior belly of the digastric muscle and second one is the posterior belly of digastric muscle. There is another muscle which is stylohyoid muscle. Stylohyoid, as the name suggests, it is attached to the styloid process and the hyoid bone. तो ये आपकी hyoid bone and हमारी posteriorly styloid process आता है. Here in this diagram anterior view है, so I can't show you the styloid process. So you should know that ये हमारा styloid process से attached है and downwardly attached to the hyoid bone. So stylohyoid muscle. Fine. Now let's talk about another muscle which is the omohyoid muscle. This black one which you can see is the the omohyoid muscle. जैसे हमने कहा था डायगैस्ट्रिक मसल की एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बेली है, वैसे ही आप ओमोहायोइड मसल जो है, ओमो मतलब कि नेम सजेस्ट ओमोहायोइड मतलब हायोइड बोन से अटैच्ड है और नीचे आपका क्लैविकल से अटैच्ड है. सो ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहे हो जो स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड से ऊपर वाला जो पार्ट है यहां तक, दिस होल इज योर सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल. एंड जो इंफीरियरली आप पार्ट देख रहे हो ये वाला स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड से नीचे वाला जो पार्ट देख रहे हो दिस ब्लैक पार्ट इज नोन एज द इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल. देयर इज अनदर मसल विच इज द ट्रेपीजियस मसल, जो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि जो हमारा पोस्टीरियर ट्राइंगल के पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है. ये जो मसल आपको पूरा दिखाई दे रहा है दिस इज द ट्रेपीजियस मसल. फाइन. सो दीज वर ऑल द मसल्स. और मेन चीज जो आपको रिमेंबर करनी है दैट इज जो हमारा स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड है वो हमारे ट्राइंगल्स को दो हिस्सों में डिवाइड करता है. एक होता है जो टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ नेक है दैट इज द एंटीरियर ट्राइंगल एंड एक तुम्हारा होता है पोस्टीरियर ट्राइंगल टुवर्ड्स द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल. अगर इस डायग्राम में हम देखें कि हमारा कौन सा इंटीरियर ट्राइंगल है और कौन सा पोस्टीरियर ट्राइंगल है, सो वील गेट टू नो कि हमारा ये जो स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड से आगे जो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं ये सारा जो पोर्शन है, दीज ऑल आर द कंटेंट्स ऑफ द एंटीरियर ट्राइंगल. ये सारा हमारा एंटीरियर ट्राइंगल है. और ये जो छोटा सा ट्राइंगल आपको पोस्टीरियरली दो दिख रहे हैं ऑन ईच साइड, ये जो छोटे से ट्राइंगल्स है स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड और क्लैविकल के बीच में छोटे से दो ट्राइंगल्स है, दीज आर दी स्मॉलर ट्राइंगल्स विच आर अ पार्ट ऑफ पोस्टीरियर ट्राइंगल. सो ये दोनों हमारे पोस्टीरियर ट्राइंगल है और ये सारा जितना भी आपको बीच में दिख रहा है दिस आर दी एंटीरियर ट्राइंगल के पार्ट्स.
Now let's talk about the smaller triangles which are present inside the anterior as well as posterior triangle. Now यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले तो ये जो मैंने ब्लैक से डिपिक्ट किया है ब्लैक सर्कल से दैट इज द पोस्टीरियर ट्राइंगल के पार्ट्स. ये जो स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड के पोस्टीरियरली दो हमें ट्राइंगल्स छोटे छोटे दिख रहे थे, ठीक है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय क्या था ये ब्लैक वाला ओमोहायोइड मसल. ओमोहायोइड मसल का इंफीरियर बेली था, ठीक है. इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय दिस ओमोहायोइड मसल, ठीक है. ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज द ऑक्सीपिटल ट्राइंगल ऑफ द पोस्टीरियर ट्राइंगल एंड जो लोअर मोस्ट पार्ट है दैट इज द सुप्राक्लाविकुलर ट्राइंगल ऑफ द पोस्टीरियर ट्राइंगल. ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स फॉर्म होते हैं पोस्टीरियर ट्राइंगल के पास. इन माय लेटर video, in my next video part, I'll explain in detail about these smaller triangles. Now let's talk about the anterior triangle के parts. सबसे पहले हमने बात करी थी ये जो आपको midline में दो triangles दिख रहे हैं, ये दो triangles, these were the digastric muscles, the anterior and the posterior belly. तो obviously digastric muscle है तो first triangle हमारा digastric triangle हो गया. ये जो digastric triangle के बीच में आपको छोटा सा ट्राइंगल जो दिख रहा है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है जिसका एपेक्स टुवर्ड्स द बेस ऑफ मैंडिबल है, टुवर्ड्स द चिन है, और इसका जो बेस है, ठीक है, टुवर्ड्स द हायोइड बोन है, दिस ट्राइंगल बिटवीन द टू डायगेस्ट्रिक ट्राइंगल्स इज कॉल्ड द सबमेंटल ट्राइंगल, जो आपके चिन के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है. फाइन. नाउ the third triangle which is the carotid triangle. So carotid triangle is this triangle, ठीक है, जो किसके रिलेशन में है, एक तो हायोइड बोन के रिलेशन में है, स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड के रिलेशन में है, ठीक है, फिर हमारा जो डाइगैस्ट्रिक मसल है उसके रिलेशन में है, एंड जो हमारा सुपीरियर पार्ट है, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड है, उसके रिलेशन में. ये जो आपको दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं ऑन ईच साइड, ठीक है, तो these both triangles are called the carotid triangle. Now talking जो हमारा हाइयोइड बोन से नीचे ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ठीक है, स्टर्नम और हाइयोइड बोन के बीच में जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड द मस्कुलर ट्राइंगल. So these all triangles were the subdivisions of the anterior and the posterior triangle, and this was all about the first part of our video. We'll discuss in detail all the subdivisions in our next video part. Hope you liked the video. If you liked my video, hit a thumbs up, do comment, like, and share my videos. Thank you. Have a nice day.